Hello friends, I, Shubhi Jain, welcome you to the world of Nanhescientist. Science is a simple word with a lot of meaning. It is the essence of life. It is the magic that works all the time. You don't have to be a magician. All you need to do is to observe and learn. At Nanhescientist, we believe observing is learning. So, what are you waiting for? Channelize your curiosity and energy in the right direction and have fun. So, be a scientist in your own way and explore this beautiful world with us. Thank you so much. Thanks a lot. बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे बैच के टॉपर डी के जैन साहब उपस्थित हैं। आज के जो इतना सुंदर कार्यक्रम और इनिशिएटिव डॉक्टर शुभी जैन ने लॉन्च किया है, उसके बारे में अपनी आशीर्वाद देने के लिए और कुछ सक्सेस टिप्स देने के लिए डी के जैन साहब की विशेषता यह है कि इन्होंने यूपीएससी में भी टॉप किया था इंजीनियरिंग सर्विसेज में, अल्टीमेटली फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन की और जर्नलिज्म पे एक किताब लिखने जा रहे हैं। और हमारे बैच के जो सेकंड टॉपर हैं वो डीएम गुप्ता साहब हैं, वो भी आज की इस सभा में उपस्थित हैं। डीएम गुप्ता साहब भारत सरकार में चेयरमैन रहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के और तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से भी अभी तक जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। शुभी जी को आशीर्वाद देते हुए सक्सेस मंत्र बताने में हमारे साथ राजेश ओबराय जी भी हैं और ये मैकॉन में जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर थे। इनकी विशेषता ये है कि आज भी स्टील प्लांट्स को ये डिजाइन करते रहते हैं और स्टील प्लांट टेक्नोलॉजी से भली भांति परिचित हैं। तो मैं आज आप सभी का स्वागत करते हुए मैं शुभी जैन जी से चाहूँगा कि वो थोड़ा सा ये बताएं कि उनका जो नन्हे साइंटिस्ट इनिशिएटिव है उनके दिमाग में कब आया, कैसे आया, और थोड़ा सा हम लोगों को उस बारे में जानकारी दें। जरूर सर, थैंक यू सो मच। रिस्पेक्टेड माय सीनियर्स, आप लोग सब मुझसे बहुत बड़े हैं इनफैक्ट, बट मैं ये एक छोटी सी मैंने ये मुहिम स्टार्ट की है नन्हे साइंटिस्ट। जैसे कहते हैं कि नन्हे साइंटिस्ट एक तरह से मेरे जैसे इट्स अ बॉर्न बेबी फॉर मी, और ये शुरुआत 2-3 साल पहले हुई जब हमें रियलाइज हुआ कि स्कूल एजुकेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्राइमरी एजुकेशन हमारे कंट्री में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। either it can make or break the candidate, definitely the students.
तो इस स्टेज पर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत ही ज्यादा लैक ऑफ एजुकेशन है, और उसका मेन कारण ये है कि हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दे नहीं पा रहे हैं, फंडिंग प्रॉपर होती नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, होती है तो उन स्कूल्स को मिलती नहीं है प्रॉपर एजुकेशन। तो फाइनली पीपल हैव स्टार्टेड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द प्राइवेट स्कूल्स। प्राइवेट स्कूल्स में भी मैंने पढ़ा के देखा है, मैंने इनफैक्ट 10th क्लास के बच्चों को जब पढ़ा के देखा, आई जस्ट रियलाइज्ड कि रियान इंटरनेशनल एंड लॉट्स ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, उनमें भी मैंने ये प्रॉब्लम रियलाइज की कि बच्चों को डेसिमल से एक डर लगता है। डेसिमल, वो दे कैन नॉट चेंज द डेसिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज सून एज दे सी द डेसिमल, एंड देन दे गेट कंफ्यूज्ड। Lot of things happen, like my own children, when they used to come to my home and then tell me कि हमें teachers practicals कराने नहीं ले जाती हैं school में। Not the fault of majorly of school also, because when there's a strength of 40 students in one class, how can the teacher afford to take all the students at the same time to a chemistry lab? It is not possible. So other than their school, we should definitely do some initiative so that we realize that other than school studies, there are a lot of provisions जहाँ बच्चे सीख सकते हैं. And NANHE Scientist is actually that Y component in the child who have that curiosity in them, that हमें और सीखने का मन है, लेकिन because of some problems, or you can say that because of the circumstances where both the parents are busy from morning till evening, they are not getting the proper network, they are not getting the proper direction in the positive manner. So how will they come to know जो basic दुनिया उनके सामने उनके चारों तरफ है, वही वो समझ नहीं पा रहे हैं। और हम बात करते हैं कि either you come in IIT or you crack IIM or wherever you can go, you go, but जो प्राइमरी एज है बच्चे की, उस टाइम पे उसको एजुकेशन देना एक बहुत ही ज्यादा और प्रॉपर एजुकेशन देना इज अ वेरी वेल, आई थिंक इट प्लान। इनफैक्ट गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग, NEP लेके आ रहे हैं वो, लेकिन अभी भी काफी स्कूल्स में इट इज नॉट क्लियर कि हाउ दिस प्रोसेस इज गोइंग टू गो। So NANHE Scientist, basically हम लोग चाह रहे हैं इसमें at both the levels, either it can be at a personal level or it can be in the school levels or urban and rural areas को cater करते हुए we are trying कि जो best of education बच्चे को मिलना चाहिए। ऐसे बहुत ही simple चीजें होती हैं। अगर हम photosynthesis की बात कर लें, we will know that okay, chlorophyll की वजह से the color of the leaves is green, but why is it that all the leaves are not green in color? So what do you mean? If suppose the leaf is yellow in color, does that mean that there's no photosynthesis happening there? But ये questions कभी हमारे ना तो NCERT बुक में होते हैं और ना ही हमारे से कोई पूछता है, और आज तक हम ये कंफ्यूजन में घूमते रहते हैं कि क्लोरोफिल अगर है तो फोटोसिंथेसिस है, अगर क्लोरोफिल नहीं है तो दैट मीन्स द कलर ऑफ द लीफ इज नॉट ग्रीन। बट क्या येलो ब्राउन लीव्स में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है? बट द ओनली रीजन इज दैट उसमें भी हो रहा है, लेकिन दोज definitely the dominating colors are masking the green color which is chlorophyll. So that is why during the fall season आप देखते हैं कि there is a change in the color of the leaves, and finally it becomes yellow, it becomes brown, and finally it drops down. So a very simple thing. लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैं किसी बड़े से भी शायद पूछूंगी तो वो नहीं बता पाएंगे कि there may be so many colors in the leaf which is not being told in NCERT books or anywhere else. So हमें एक basically जागरूकता लानी है बच्चों में कि life is not a magic, it is something real, or everything whatever the process is happening in front of them definitely has the energy involved, which is a spontaneous energy. तभी reactions हो रहे हैं. There is some purpose for every reaction to happen, और उसका reason है कि वो spontaneous है. It is a spontaneous process which is happening, but हम उनको हमेशा उसको एक बहुत ही theoretical way में समझाते हैं. We want to try to educate them through books. I think the time has changed. Now it's a need to actually tell them practically कि अपने हाथ से करके देखो, and then you come out with the interactive session, and we can interact with them more and more so that उनके जो मन की एक हिचक है, एक hesitation है,
that will come out and they will become a confident child. So I think that is more important. A street smart, confident child is more important than scoring high numbers. So according to me, हम इस principle को believe करते हैं, because every child is different and we should never pressurize any child for, you know, for doing that particular thing. Because अगर आपको science stream लेनी है तो आप वही लीजिए, but I think that's a wrong approach. And so that is how the Nanhescientist was actually built up. धीरे धीरे करके we were doing at a community level, मतलब अपने ही जैसे हमारे ही group में we were doing it. I am staying in Navy, so I was doing in Navy campus only, but now I want to take it to a national level and then probably globally. So that is my basic motto. And Nanhescientist mein we actually believe that a child who is smiling actually goes an extra mile. So if the child has to be happy when he comes to the class, he himself should say that I want to listen even more. So इसलिए Nanhescientist में हमने kids corner भी रखा है, जिसमें we are not actually suppressing their creativity. We want them to be creative. At the same time, they should learn in science in a very practical, fun and creative way. वो जब खुद करके देखेंगे तभी ये पॉसिबल है कि वो इस बात को सीख पाए. एनसीईआरटी बुक्स में लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज आर देयर, बट उसमें से आधे से ज्यादा बच्चे स्किप कर देते हैं बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू कम इन द एग्जाम. सो दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम कि हमें उस चीज का ध्यान रखना है कि जब हम पढ़ाई करा रहे हैं बच्चों को तो हमें इस वे में करानी है कि वो हंसते खेलते हुए करें. And this is a very major issue actually. ये आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें even Infosys के चेयरमैन नारायण मूर्ति सर has also told कि जब आप सिलेबस में से क्वेश्चंस डालते हैं तो बच्चा अच्छा स्कोर करता है, 100 में से 99 और 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करता है. लेकिन अगर आप बच्चे को सब्जेक्ट के आउटसाइड कोई क्वेश्चन देते हैं then they get confused. And this is the reality of the mindset is also the reality, because till the time बच्चा फिटजी जा रहा होता है उसके ऊपर हर तरह से चारों तरफ से और you know any educational institute वो जा रहा है for preparing for IIT. This is the major stress on the child to you know fulfill the needs and the pressure around him or herself कि हमें IIT crack करना है. So I think that pressure should not be there. इस education को हमें 6th standard onwards एक बहुत ही सिस्टमैटिक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके चलना चाहिए, जिससे कि बच्चे का माइंडसेट टिल 10th और 11th क्लास तक अपने आप वो चाहे कि हमें को आईआईटी क्रैक करना है, व्हिच इज एक्चुअली द चिल्ड्रन हैव टू फेस. एंड ये इंडिया की प्रॉब्लम मुझे नहीं पता कि आई थिंक यू विल बी द बेटर पर्सन टू जज एंड टू एनालाइज द सिचुएशन. बट ये एक प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज एजुकेशन इज एक्चुअली बिकमिंग अ बिजनेस दीज डेज. Nanhescientist. Thank you. Thank you, Dr. Shubhi Jain Agrawal. तो शुभी जी, मैं इससे पहले कि अपने पैनलिस्ट से कहूं कि आपसे प्रश्न पूछें, मुझे जो आपके इनिशिएटिव में अच्छा लगा वो ये लगा कि पीएचडी करने के बाद बच्चे जो हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल को पढ़ाना पसंद करते हैं. आपने जो ड्राइव विलिंगनेस दिखाई है बच्चों को नन्हे साइंटिस्ट को होन करने की, दिस इज रियली वेरी प्रेजवर्दी. सेकंड पॉइंट मैं कहना ये चाहता था कि आज के दिन हम 3 जनरेशन के लोगों से जुड़ रहे हैं. फर्स्ट जनरेशन में जो हमारे साथी लोग हैं, जो पैनलिस्ट हैं, सेकंड जनरेशन में आप हैं, और थर्ड जनरेशन के वो नन्हे साइंटिस्ट हैं. इन 3 का अगर इंटीग्रेशन हो सके, चाहे अलुमनी एसोसिएशन के माध्यम से हो सके, चाहे किसी और सोशल सर्कल के माध्यम से हो सके, या किसी हर एकेडमिक इंस्टीट्यूट में, मेरा मानना है कि एक नन्हे साइंटिस्ट की ब्रांच होनी चाहिए. मुझे लगता है कि सीनियर सिटीजन्स इज ए वेरी वंडरफुल रिसोर्स, और आपके लिए मैं चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से हर महीने किसी सब्जेक्ट पे हम सीनियर सिटीजन को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे किसी सब्जेक्ट के लिए, और आपके बच्चे भी हों, ऑनलाइन उनसे डिस्कशन हो, उनको ऑनलाइन एजुकेशन दें,
ये मेरी सोच थी, और मेरी सोच ये है कि विद्यादान इज महादान। जैन साहब, हमारे अनिल जैन साहब एस्ट्रोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, मैं समझता हूँ वो ये इस बात को मानेंगे, जो विद्यादान करता होगा वो निश्चित रूप से वो स्वस्थ भी रहता होगा, और इससे बड़ा यज्ञ कुछ नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू ask and request Mr. D.K. Jain to kindly suggest, comment, and bless Shubhi for her this initiative. Thank you. Let me begin by asking a couple of small questions. Why do you call it NANHE Scientist? Is it only about teaching of science, or it's about education overall? Yes. So NANHE means obviously small, and because we are catering for small kids, so definitely we wanted some word which is related to small kids, and it came out to be NANHE. And because I have worked in Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai, and there I was a scientist. I was visiting scientist for a small period of time when I joined at Mumbai. So definitely that thing was there in me, because I just love to experiment as much as I can. I do it in the kitchen as well. So it is everywhere. So what is science? Science is everywhere around you. Wherever you see it, you will find science. So that is why I actually kept the name as NANHE Scientist. So that is how it actually started with. Then you pointed out a distinction between private and public schools. It's not that it is not being done. We had a batchmate in our mechanical, in our batch, who later switched over to electronics and communications, Pankaj Suman Jain. He lives in Ahmedabad, and he has been running a chain of schools in several states, in several districts, in which he teaches children from backward classes. And he has very innovative approach, very successful approach. He gets some grant from the state governments also. But it's a very small budget thing. He pays his teacher, you will not believe it. That's just like I could not believe, only about 1,000 or 2,000 rupees per month. I find it difficult to believe that you can get teacher at any level these days for that kind of pittance. But he does get them, and he's been running it for many years now successfully. So it's not that it is not being done. There are many other places and many other NGOs and institutions which are doing a somewhat similar approach that you are doing. This does not mean that you should not do it, or I'm just trying to discourage you. Obviously, sir, I'm into it, so I'm doing it. Yes, sir. No, certainly, but it is being done already. And the more the merrier, because we are a big country of 140 crore people, and we have a very large number of children, including from the backward classes. So they need all the support that we can provide them from the society. Yes, sir. So all the best to you, Shubhi. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Mr. D.K. Jain. Now I want to request दिनेश मोहन गुप्ता साहब, आपसे मैं चाहूंगा कि आप अपने कमेंट दें। मैं उससे पहले जो आपसे पहले बात हो रही थी उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। मेरा मानना हमेशा से ये रहा है कि अगर हमारा प्रोफेसर, टीचिंग फैकल्टी आउटस्टैंडिंग रही है तो सब्जेक्ट भी समझ में आता है। और डॉक्टर डी.वी. सिंह अपने जमाने में, या डॉक्टर ग्रोवर, या डॉक्टर डी.वी. शुक्ला थे। तो मेरा मानना ये है कि आप इस बात से क्यों घबराते हैं कि साहब ये वर्चुअल क्लासरूम नहीं हो सकता। मेरी सोच ये है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट जहां भी पढ़ाया जा रहा है, हम उसके लिंक बच्चों को दे सकते हैं, ना कि एक थर्ड क्लास ग्रेजुएट से या बी क्लास पीएचडी से पढ़ के बच्चा इतना सफल नहीं हो सकता। डीएम गुप्ता साहब, आप इस पर और शुभी को आशीर्वाद देते हुए कुछ सक्सेसफुल मंथ उसको बताएं इस मिशन के बारे में। थैंक यू। शुभी, मैं बड़ा खुश हूं कि आपने इस दिशा में काम करना शुरू किया जिसमें ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस सब्जेक्ट में थोड़ी सी चर्चा करें, 2-3 सवाल मेरे जहन में आते हैं। सबसे पहला सवाल है कि नन्हे साइंटिस्ट की आप बात कर रहे हैं तो हम प्राइमरी तक की एजुकेशन की बात कर रहे हैं मोस्टली, ऑब्वियसली, राइट।
और मेरे हिसाब से सबसे पहला कारण है कि हम उनको जो एजुकेशन दे रहे हैं, चाहे साइंस की हो चाहे कोई भी हो, उनकी मातृभाषा में नहीं दे रहे, अंग्रेजी में दे रहे हैं। और ये प्रेस्टीज इशू बन गया है कि ये अगर लोकल अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ेगा तो ये बेकार हो जाएगा। उसके फंडामेंटल्स का हम सब, मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं जहां 10 पैसे फीस होती थी, तो उससे नहीं होता। जब आपके फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे फाउंडेशन लेवल पे, तो अपना बड़ी इमारत उस पर खड़ी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर एक। दूसरा सवाल यह है कि मैं जितने लोगों को जानता हूं उनमें से किसी ने भी अपने बच्चे को बाय चॉइस टीचर नहीं बनाया है। एक शायद 100 में से एक या आधा भी नहीं होगा। क्यों? और जिन्होंने बनाया है वो नौकरी करना चाहते हैं सरकारी स्कूल में और बच्चों को पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल में। क्यों? ताकि काम कम करना पड़े, इसलिए और तनख्वाह ज्यादा मिले। सिर्फ यहां वेरी ब्लंट। तीसरी बात, क्या होता है कि जो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है वो वहां दिखाना जरूरी है। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि 40 बच्चे अगर हैं तो उन्हें लेबोरेटरी में या कक्षा में करके दिखाया नहीं जा सकता। हम लोग जब पढ़ते थे सारे सरकारी स्कूल में तो क्लास में 55 से 60 बच्चे थे, लेकिन फिर भी टीचर वो दिखाते थे। और जो बच्चे थोड़ा प्रोमिसिंग लगते थे उनको वो एक्स्ट्रा भी बिना किसी ट्यूशन के बताने के लिए, फंडामेंटल क्लियर करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बेंगलोर में रहता हूं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन वहीं पास के अच्छे ग्लोबल व्हाइटफील्ड स्कूल में पढ़ते हैं, और मैंने वहां देखा है कि मेरी डॉटर, मेरा ग्रैंड डॉटर 11th-12th में थी, उनको जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है और प्रैक्टिकल उसके साथ साथ नहीं हो रहे। मैं एक बार जाकर उनके प्रिंसिपल से मिला कि मैडम जब आप साइंस पढ़ा रहे हो, फिजिक्स पढ़ा रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, तो जो टॉपिक पढ़ा रहे हो वही प्रैक्टिकल कराओ ना। बोले नहीं नहीं नहीं, वो प्रैक्टिकल नहीं है, पूरा थ्योरी खत्म करके हम एक साथ प्रैक्टिकल कराएंगे। कुछ नहीं कराया है उसको। रियोस्टेट बता रहे हैं, उसको रेजिस्टेंस बार बता रहे हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा रहे हैं, करा के कुछ नहीं दिखा रहे हैं। जब पूरी थ्योरी समाप्त हो गई तब उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर सारे प्रैक्टिकल करा दिए और हमसे बोला आप चिंता नहीं करो, नंबर हम दिलवा देंगे। सवाल नंबर का नहीं है। तो बेसिक सोच जो है वो मार्क्स सेंट्रिक हो गई है, टीचर की भी, सोसाइटी की भी। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले जो नन्हे बच्चे हैं, प्राइमरी लेवल के हैं, उनको वर्नाकुलर लैंग्वेज में अगर फंड क्लियर किए जाएंगे तो निश्चित रूप से वो बेहतर समझेंगे। अंग्रेजी में प्रेस्टीज जरूर हो गया है, लेकिन फंडामेंटल शुरू में क्लियर नहीं होंगे। एक बार क्लियर हो गए तो फिर इमारत बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी कभी भी सीख सकते हैं। तो एक कारण ये है। दूसरे ये है कि सैलरी, अभी डीके ने बताया है कि हम डीके जैन को डीके बोलते थे, उसने बताया कि साहब वो जो पंकज सुमन जैन है वो 1000-2000 में टीचर मिलते हैं। हो सकता है क्योंकि हमारे रोटरी क्लब का मैं मेंबर हूं, वहां भी ऐसा होता है। लेकिन अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो मेरे हिसाब से प्राइमरी टीचर्स को सबसे ज्यादा सैलरी इतनी अट्रैक्टिव हो कि लोग आगे आए कि हम प्राइमरी में पढ़ाएंगे, और उसका मतलब डिफिकल्ट सिलेक्शन हो। लेकिन वो तो है नहीं। और सरकारी स्कूल निश्चित रूप से कर सकते हैं क्योंकि उनकी मंशा पैसा कमाना नहीं है। बेंगलोर में स्थिति ये है कि 5-5 लाख रुपए एक साल की फीस है क्लास 1 की, और पढ़ाई जीरो। अनफॉर्चुनेटली माँ बाप पैसा बहुत कमा रहे हैं, उनके बच्चे नंबर अगर कम ला रहे हैं, उनके मन में एक चीज बैठा दी गई है कि हमारे पास दूसरा एमए, मनी बहुत है, तुम पास हो जाओ, दाखिला हम करा देंगे। तो जब ये चीज बच्चे के दिमाग में आ जाएगी तो वो आगे सीखने की नहीं सोचेगा। और मार्क्स सेंट्रिक पढ़ाई स्पेशली इन द इनिशियल क्लासेस, ये बिल्कुल गलत है। चौथी चीज, जिसको आप प्रोमिसिंग पकड़ते हैं, जो बच्चे में आपको लगता है कि दम है, आगे बहुत तेजी से जा सकता है, जैसे मेरे कुछ दोस्त लोग यूएस में हैं, वो बताते हैं कि वहां पर डबल प्रमोशन का प्रावधान है। जरूरी नहीं है, अगर बच्चा बहुत फास्ट है लर्निंग में और उसकी नॉलेज बहुत तेजी से बढ़ रही है तो फटाफट वो क्लासेस जंप करा देते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंडिया में मैंने देखा है कि ऐसा मुझे तो दिखाई नहीं दिया। इन जनरल एक आध कोई केस होगा, हिस्ट्री तो बात अलग है। तो मैं 3 मुद्दे यहाँ पर ये रखना चाहूंगा कि मैंने क्लास जंप करी थी, आगे बढ़ाना है। मैं अपनी जरा बात पूरी कर दूं। नंबर 1, वर्नाकुलर लैंग्वेज में इनिशियल पढ़ाई दी जाए। अगर उनकी मदर टंग इंग्लिश है तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल स्टार्टिंग स्टेज में क्लियर होना बहुत जरूरी है। दूसरे, सबसे ब्राइट टीचर वहां पर रखे जाएं
और टीचर वो हो जो हमेशा स्टूडेंट रह सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ए टीचर कैन नॉट ट्रूली टीच अनलेस ही इज लर्निंग हिमसेल्फ, ए लैम्प कैन नॉट लाइट अनदर लैम्प अनलेस इट कंटिन्यूज टू बर्न इट्स ओन फ्लेम। अपना जिसका दीपक बुझ रहा है वो दूसरे का दीपक क्या जलाएगा? Exactly. लेकिन आजकल यही हो रहा है। और तीसरी चीज की मार्क सेंट्रिक पढ़ाई नहीं हो, होशियार वो है जो 100 में से 100 लाया। फंडा क्लियर है या नहीं है? आपने ये भी कहा था कि अगर सीबीएसई ने कुछ हाल में एफर्ट किए हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में और सब्जेक्ट में भी उन्होंने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वो किसी किताब से नहीं होंगे जैसे सेट वगैरह के एग्जाम में आते हैं। लेकिन उससे थोड़ी सी शुरुआत हुई है और इसीलिए इस साल 12th में बहुत ज्यादा बच्चों के 100 में से 100 नहीं आए हैं, 96, 97 में अटक गए हैं। एक आध बच्चे के आए होंगे, क्योंकि मेरी ग्रैंड डॉटर ने दिया है इसी साल, तो इसलिए मेरे को मालूम है। तो इन चीजों पे अगर ध्यान देगी और सरकार ही नहीं, सोसाइटी की जो सोच है उसमें भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। वो आप और हम मिला सकते हैं, सोसाइटी कौन है? आप और हम मिला के सोसाइटी है। वो नहीं हो रहा है। और बच्चे को ये डंडा नहीं चलाए रखो कि नंबर लाने हैं, 100 में से 100 लाने हैं, उसके ज्यादा तेरे से कैसे आ गए। ये तो सबसे ज्यादा घातक है बच्चे के लिए। जो कर रहा है वो भी छोड़ देगा। बट अनफॉर्चुनेटली इट इज हैपनिंग इन एवरी हाउस। ओके, so these are my few inputs as far as, but your initiative is definitely praiseworthy, and whatever we can contribute, we will definitely like to contribute in whatever way it is. थैंक यू डीएम गुप्ता साहब। मैं चाहूंगा कि अरुण कुंद्रा जी यूएसए से हैं, उनके फादर नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जमशेदपुर में बहुत ही सीनियर साइंटिस्ट थे। मिस्टर कुंद्रा से हम स्लाइड में भी कहना चाहते हैं कि जितने भी रेप्टेड जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया, साइंटिस्ट हुए, वो लगभग हमारी जनरेशन के नहीं थे, हमारी जनरेशन के पहले के थे। चाहे सीवी रमन साहब हों, चाहे वाबा हों, चाहे विक्रम साराभाई हों, या कोई भी हो। तो कुछ गैप जरूर रहा है। हर साल एक सीवी रमन पैदा होना चाहिए इस देश में, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है। ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप काफी बड़े देशभक्त भी हैं और यूएसए में बैठ के इंडिया के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो आई थिंक यू कैन एडवाइज शुभी accordingly. Thank you. Okay, I'll log off, and thank you, Sudhir. So nice, but I think you said a little bit more than what I am. I'm just an ordinary person, not even at the match of DM Gupta and you and DK. But I have some ideas. I'll ask Shubhi one question before we knock off here. What is her program? I really do not know her program. And maybe the reality is that the quality of Indian education is one of the poorest in the world. Just to give you a data point, in 2003, we conducted a controlled experiment. We gave a very simple test to students who had passed BTech in computer science. The average mark obtained by them was just 3 out of 100. Just about 3 months ago, one of my former colleagues conducted another test. While 95% of the BE in computer science got 95 marks out of 100, when they were given problems that had been solved in the class by the teacher, they got 3 out of 100 when given problems that had not been solved by the teacher. So therefore, I think our education system has to be enhanced. So there are 2 kids' toys you all are aware of. There is a toy, Lego, building blocks. We make new things, by rearranging those blocks. There is another game called Jenga, where already the blocks are stacked and somebody is pulling one after another and waiting for everything to collapse. India is not playing the Jenga game. India is playing the game of building blocks. We have the right digital building blocks in place. Before I end, try imagining all these as the rivers flowing somewhere. There is one river called digital identification system. There is one river which is flowing called UPI or digital payment system. We have increasing penetration of
mobile network, internet, they're all joining together. And we are going to create an ocean of opportunities. We are going to reach an ocean of digital opportunities. That's in every value chain, take even taxis, there is one landlord that has emerged, Ola and Uber. Everybody's profits are going to be sucked up by Ola and Uber. Take airlines. All airlines in the world put together for 70 years, without exception, have made less profits than Boeing and Airbus together. Pfizer makes more profits than top 100 hospital chains of the US put together. Cisco has having a bad year, and yet last year it made more profits than the top 5 European mobile operators, which includes Vodafone put together. This is a problem where the value capture in the value chain is now concentrated in one part of the value chain. And if as a country you don't have a company that operates in that value chain, you can do whatever antics you want to try and capture the profits is not going to work. The real solution is to create Xiaomi's in India. The real solution is to create Googles and Microsofts in India. Did you ever actively plan and work towards becoming CEO? And what was that thought process? Absolutely not. Did not actively plan and work towards being CEO. Had I done that, I would not have been CEO. I think focus on the job you're doing very, very well. And understand the politics, but don't play the politics. Put the company before you and look and see how your job interacts with everything else around you. And invest in communication skills. Invest in communication skills. You know, project yourself based on your competence, nothing else. And everything else takes care of itself. Did you ever actively plan and work? Most of the profits of global Apple, except the Apple US, went to a company in Ireland which never filed its return for 30 years. For 30 good years, it never filed its return. So Apple pays global taxes at a rate of 1.6%. So that's as easily as possible. See, OECD, as been discussed, is a organization for economically developed countries. Artificial तरीके से OECD ने क्या किया है? Companies को एक Apple है. Apple is sold as Apple. It doesn't matter whether it is Apple India, Apple Pakistan, Apple Iran, whatever. But what OECD does it divides Apple into 100 artificial entities. 100 artificial entities it divides into Apple India, Apple UK, Apple Ireland, और profits वैसे ही distribute हो जाते हैं. Now you have to invert the pyramid. You have to take the whole enterprise as one and tax the enterprise profits. Now we already got Aadhaar. On top of it, we have got eKYC. On top of it, we have got cloud storage in the form of DigiLocker. Then we built, the payments interface. Now, two big layers are coming on top of it. One is the ONDC, which is the Open Network Digital Commerce, and that will revolutionize the way India does e-commerce. ONDC will, in my view, change the way India shops. So if you think today, when you go to an e-commerce website, the e-commerce company decides what you can buy, from whom you can buy it, how you pay for it, and how it gets delivered. Under ONDC, this experience gets unbundled. And you will have many more product choices from many more vendors. You will have many more payment mechanisms and many more delivery mechanisms. And then OCEN, which is the Open Credit Enable Network, which will change the way India lends and borrows money.